So the monks don't get married, right? No, You don't get married. You don't have. So how? I'm asking a very personal question. Okay. So everyone has needs. So you have sexual needs as well, right? Yeah. So how do you fulfill those sexual needs if you don't marry? हेलो बुक बडीज, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आप सबको मेरा सलाम पहुंचे फ्रॉम द ब्यूटीफुल लैंड ऑफ थाईलैंड। दोस्तों, मैं इस वक्त एक कमाल की खूबसूरत जगह पर बैठा हुआ हूं। इसका नाम है प्रोमथेप केप। दरअसल ये थाईलैंड का जो सबसे बड़ा आइलैंड है ना, फुकेट, उसकी सदर्न मोस्ट जगह है। एक ऊंची पहाड़ी, सामने अंडमान सी के ब्लू वाटर्स, कुछ ब्रेथ टेकिंगली ब्यूटीफुल लोनली आइलैंड्स, और मैं और मेरी तन्हाई। दोस्तों, ये एक बकेट लिस्ट आइटम है। अगर आप थाईलैंड आए तो आपने इस जगह को मिस नहीं करना। इट इज वन फैसिनेटिंग प्लेस। थाईलैंड है ही कमाल का मुल्क, क्या नहीं है यहां पर। कमाल के नेचुरल पार्क्स, पैराडाइज जैसी वाटरफॉल्स, टर्क्वाइज कलर्ड बीचेस, नाइट लाइफ, शॉपिंग, यू नेम इट, थाईलैंड हैज इट। दोस्तों, ये मेरा छठा ट्रिप है थाईलैंड का। इसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाउ मच आई लव दिस कंट्री। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ की सिर्फ सेक्स लाइफ, नाइट लाइफ, मसाज पार्लर तक ही रह जाते हैं। दे डोंट गेट टू एक्सप्लोर द रियल थाईलैंड। लेकिन दोस्तों, इस दफा यहाँ पर आने की एक स्पेसिफिक वजह थी, और वो वजह ये थी कि मैं ये देखना चाहता था कि बुद्धिज्म का आखिर क्या इंपैक्ट हुआ है थाईलैंड की सोसाइटी पर। रिलीजन और थाईलैंड के लोगों का आपस में क्या तालमेल है। आप सब लोग जानते हैं कि मैं वर्ल्ड रिलीजन्स को समझने की और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसी कड़ी में मैंने बुद्धिज्म के ऊपर 2 वीडियोस भी प्रोड्यूस की थी, विच यू लाइक्ड वेरी मच। इसी कनेक्शन में हुआ ये कि नॉर्दर्न थाईलैंड का एक बहुत ही खूबसूरत शहर है चियांग माई, वहां पर मैं मौजूद था, और वहीं एक टेंपल के विजिट के दौरान मेरी मुलाकात हुई 2 यंग बुद्धिस्ट मंक से, और मैंने इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर इस्तेमाल किया और उनके साथ बुद्धिज्म के बारे में गपशप लगाई। उनका कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड क्या है, क्या वो खुदा पर मानते हैं या नहीं, क्या बुद्धा ही उनके लिए खुदा है, क्या बुद्धिज्म कन्वर्जन पर बिलीव करता है, ये वो सब सवाल हैं जो मैंने उनसे किए। इस कन्वर्सेशन को मैंने रिकॉर्ड करने की भी कोशिश की है। माइक नहीं था, लेकिन उसके बावजूद ऑडियो काफी क्लियर है। पहले हमारी इस कन्वर्सेशन को सुने, फिर मुझे आपसे बुद्धिज्म और थाईलैंड के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें करनी है। So I was doing a lot of research on Buddhism. In fact, I made a video on Buddhism on my YouTube channel. So if you search on YouTube, Book Buddy, you will see my videos on Buddhism, and they get appreciated a lot in terms of the information they have. So, what's your name, by the way? My name Nop. Nop. You're Nop, and you? Don't. Dolt. Yeah, don't. Dolt. Nice name. And what about you? My name is Shahrukh. 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 Nice to meet you. Thank you. Nice to meet you too. So when I was doing research, I got to know about what Buddhism is, right? So I'll throw a few questions and then you let me know whether that's right or not. My understanding. Okay? So the first thing is, Buddha is not God, right? Right, that's right. Yeah, that's right. So Buddha is not God. Yeah. Number one. And then one thing which I loved about Buddhism, that Buddha says, don't believe me, don't trust me, check yourself, check everything yourself. Whatever I say, you should have faith in that, but you should go and check for yourself whether what I am saying is the truth or not. Is that correct? Yeah. Right? Buddhism, it's how Buddha said that. Come. Yeah. Prove what I say. Yeah. So what's your belief in God? Do you believe in God? I don't believe in God, but I still respect people who believe in God. Okay. Because I think people, they have their own belief. People, they have their life. People, they have their right to choose what they want to believe. Right. We don't tell them that the thing that you believe Is right or wrong? no. Because it's they choice. Yeah. That means just respect them if they believe in God. But for me, if you ask me, I don't believe in God. Yeah. But
I believe the God is not a person, but Yeah. the God is the goodness. Yeah, it's goodness. The Yeah. goodness that you Yeah. keep doing. That's Yeah. God for me. Yeah. So when I was reading Buddhism, about Buddhism, so someone asked this question to Buddha, that do you believe in God or do you believe in life after death? And what was written was Buddha didn't answer this question. So what I got to know was that for Buddhists, it's not important whether God exists or not, or whether God created the universe or not. It's of no importance. What you believe is, because it's a very practical religion. It's very practical of how you conduct your life, what's your moral code, and how do you conduct yourself, how do you deal with people. So in terms of your belief, because for you Buddha is not God, right? He is an ideal human being, perhaps, who you want to emulate or who you want to copy. And another thing is the statues of Buddha, they reflect certain quality of his. For instance, kindness. Another, generosity. Another statue tells about maybe being noble or being virtuous. And when you look at those statues, you actually want to imbibe those qualities of Buddha in your own personality. For example, if you see Buddha as a generous person, you want to make yourself generous. Is that correct of how Right. Buddha is? Yeah. Okay. Statue is kind of to remind of the Buddha teaching, Okay. remind of the Buddha principle, Okay. remind of the Buddha experience. Okay. Have you reached that stage of nirvana in your life? How old are you, by the way? I'm 20. You're 20, you're very young. And what about you? 20. 20, you do bodybuilding as well. He was boxing. Boxing? Yeah. Okay. So, how far are you from the stage of nirvana? You're following the Eightfold Noble Path. Yeah. Okay. Yeah. So, can you tell me about that? First, I haven't get nirvana yet. Not yet. Not yet. Okay. And I don't know how or when. I don't know when I gonna get nirvana. Okay. But Buddha said in Pali words, Yeah. Nibbana, Nibbana. Paramang Sukham. Paramam Sukham. Yep. Nirvana is happiness. Yeah, nirvana is happiness. Yep. Yeah. Whenever you're happy, Yeah. that's your nirvana. Yeah. So, yeah, that's a good concept. So, are you happy right now? Because you have become a monk. In monks, like, you can always go back to your normal life. Of course. Whenever you want, you can just go back to your normal life. Right. Right? But one thing that Buddha says is that you need to meditate and stay away from the crowd so you can get directly in touch with the divine. So, how do you meditate, and how many hours do you meditate in a day? I meditate in the morning and evening. Okay. How long? Buddha never mentioned the specific time. Okay. They will have to do meditation. Okay. That means we can keep practice as long as we can. Okay. But in my temple, I do 30 minutes Okay. or 1 hour. 1 hour. But this is from my senior. Okay. It's not from Buddha. Okay. From Buddha never mentioned Yeah. about the period of time. Yeah. That means just keep practice as long as you can. What is one difference that you have seen in your life before you become a monk and now? What is one big change? Means your focus has increased. You have become a better human being. What changes in your personality have you seen? I think my perspective Okay, perspective is changes a lot. okay. The way I look at people around me, Okay. the way I look at myself, the way I look at the world, it changes. Okay. Okay, that's My good. perspective changes, and after I become a monk, I feel like I'm not really judging people. Oh, you're not judging people. No. That's great. That's I'm not blame something that happened. Or yeah, I blame myself, but Okay. not other people. Yeah. I agree with you that we should respect every religion. Yeah. Me, I think humans, it's great that we have religion to follow. Yeah. But make sure that you understand the concept of your religion. Yeah. You have a right understanding about your religion. Because
if you believe something, especially your religion, but if you don't understand Yeah. the real principle of your religion, Yeah. and then you might not follow your religion, even though you said you believe that religion. Make sure that when you believe something or when you believe in religion, make sure you understand that religion really, really clear. I'm a Muslim, right? So, what's your mission? Means, for example, in Islam, we send our missions to different countries, and we tell about the religion of Islam and how good it is. Like Buddhism is good for you, for us Islam is good, and we want people to convert to Islam. So, what's your mission? Do you want people to convert to Buddhism, or the conversion is you promote that, you encourage that, or you just say, okay, whatever you believe, you're a Muslim, that's good. Like in Hinduism, because I studied Hinduism as well. You can be a Muslim and you can actually follow the Hinduism principles as well, because for them, this is the destination. This is your way, this is my way, but the destination is the same. So what do you believe? Do you want people to convert to Buddhism, or what's your point As of a view? monk, our conviction is not converts people, but try to make people understand about their life. Okay. Try to make people understand how to live in the community with other people, Yeah. how to live in the world as a human being, Yeah. by peaceful or happily. Yeah. But we don't convert. We just teach them Okay. to have a better life, to have a better perspective, to have more knowledge, Yeah. to live in the world. Yeah. Yeah. And then they can choose whatever they want. If they have a better life, Fantastic. if they're happy, if they enjoy with their life, Yeah. and then they can choose by their own Yeah. what they're gonna believe. Fantastic. So the monks don't get married, right? No. You don't get married. You don't have. So how? I'm asking a very personal question. Okay. So everyone has needs. So you have sexual needs as well, right? Yeah. So how do you fulfill those sexual needs if you don't marry? Try to know that emotions it just come us Yeah, but because your yeah. sixth sense. Yeah. You see, Yeah. you hear, Yeah. you take or you smell or you touch something. Yeah. And also sexual pleasure. It's not real happy. It's temporary happy. Temporary happiness. Okay. And if you follow your sexual pleasure, you don't get wisdom. Yeah. You get happy, but it's temporary happy. Yeah. And it's gone. But how do you because it's a very strong emotion. So are you trained to stop your sexual Not to stop, to reduce. To reduce it. And then Okay. it stop by itself. Stop by itself. Yeah, to reduce. Okay. To reduce. First, as a monk, we have made one technique. Look at body, Okay. leg body. Okay. At the monk, we look at only male body. Okay. Look at the body, not attached to the body. Okay. Just think body is something that is not really, it's not always pretty. It's not forever. It's Yeah. changing. Yeah. It's not a thing that you have to attach. Yeah. But it's just a thing that you just appreciate Yeah. every moment of your life. Yeah. Because if you attach, when you get old, but you don't want to get old because Yeah. you attach. Yeah. But you enjoy every moment of your life. When Yeah, you get yeah. old, when you're young, when Yeah. you're teenager, you're happy. Yeah. First, you look at their body, not attack the body. Yeah. And in Buddhism, as a monk, if I see some woman younger than me, we should think of that is our younger sister or younger brother. Okay. Okay. If we see some person, some woman, same age, we look at them. This is friend. Oh, our friends, Okay. human friend, Okay. mankind. Okay. If we look at, if I see some woman older than me, oh, this is my older sister. Older sister. I should respect. Okay.
or is it like really old, same as my mom? Oh, this is my mom. Yeah. That's it. It's gonna change your perspective. Yeah. You don't have the Yeah. sexual pleasure of this Yeah. of this view. Yeah. But and also we try to have a busy schedule. Okay. So your mind is not idle, because when you are idle, you don't have much work, so you think about those thoughts. But when you're so busy, then you don't get to think about it. But when you're busy with something, that's make sure that the thing that you're busy with is the thing that can improve your life. Okay. It's not busy with some. For example, it's not Yeah. busy with the game. Yeah. It's not busy with do something that's stupid. But it's busy with something that it give you knowledge, like Yeah. reading, Yeah. make conversation with some people knowledgeable. Well, so you read as well? Do you read books? Yeah, read Which books do you read? any kind of book. Religion books or? Religion, philosophy, Wow. politics. What's your favorite philosophy, by the way? You read European philosophy like Immanuel Kant, Friedrich Nietzsche? Plato. Huh? I read Plato? Oh, some. Plato. So have you read The Republic? Yeah. You read The Republic. Great. Socrates, Plato, great philosopher. So one thing I want to praise you. Okay? Please tell me your name again. No. Nope. I have been in Thailand 6 times. This is my 6th trip in Thailand. Yep. You are the best person in terms of your English communication skills. So that shows that you're a monk, but you haven't given up on your education. So for you, education is important. Of course. And when you combine religion with education, it makes you more self-aware, and it makes you more well-versed, and it helps you communicate with people. So Noop, great work, and you speak English really well, and I wish you all the best. Very nice. Thank you so much. Nice meeting you, and I wish you all the best. Thank you so You much. too. Nice meeting you. Thank you. ओके बुक बडीज, वी आर बैक। आपने हमारी डिस्कशन सुन ली, लेकिन इस कन्वर्सेशन को डिकोड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लिहाजा मैं इसको अब 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। पहले मैंने जो इस मंक के साथ बातचीत की है ना, उसकी हाउसकीपिंग समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो पूरी हमारी जो कन्वर्सेशन थी, जो गुफ्तगू थी, उसके दौरान वो एक भी दफा डिफेंसिव नहीं हुआ। ही वॉज ओपन टू डिस्कशन। इनफैक्ट आप थाईलैंड के अलग अलग टेम्पल्स में जाएंगे तो वहां पर साइन बोर्ड्स लगे होते हैं कि आप सिर्फ तस्वीरें ना लें, बल्कि हमारे मंक से आके बात करें, बुद्धिज्म को समझने की कोशिश करें। दूसरी बात ये जिसके लिए मैं मंक को अप्रिशिएट करूंगा वो ये कि ही वॉज विलिंग टू हैंडल टफ क्वेश्चंस। मैंने उसकी सेक्सुअलिटी के ऊपर बात की, मैंने उसके कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड के ऊपर बात की, मैंने बुद्धा के बारे में अपना पर्सपेक्टिव बताया, एंड ही वॉज ऑल एयर्स। उसने गौर से मेरी बातें सुनी और अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड किया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये जो आपने इस कन्वर्सेशन से समझनी है ना, वो ये कि जब भी आपने किसी शख्स के साथ रिलीजन यानी मजहब के ऊपर बात करनी है तो हमेशा रिलैक्स होकर बात करनी है। नो वन इज रॉन्ग। उसका अपना पर्सपेक्टिव है और मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, और दोनों के नजरिए को, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। आपने शायद ये भी नोटिस किया हो कि इस 15 मिनट के क्लिप के दौरान मैंने कहीं भी उसको चैलेंज करने की कोशिश नहीं की कि मैं बड़ा मुसलमान आ गया हूं और मैं अब तुझे दीन सिखाऊंगा और तू जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। दिस इज अ वेरी 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 रॉन्ग अप्रोच। मैंने हमेशा आपको बात सिखाई है कि रिलीजन के मामले में डॉक्ट्रिनल एब्सोल्यूटिज्म सही नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि जो मैं मानता हूं, जो मेरा मजहब है, वही हक पर है और वही सच पर है। मैं एक मुसलमान हूं और मेरे लिए इस्लाम एक बेहतरीन रिलीजन है। इसी तरह एक बुद्धिस्ट के लिए बुद्धिज्म बेहतरीन रिलीजन है, एक हिंदू के लिए हिंदुइज्म और एक क्रिश्चियन के लिए क्रिश्चियनिटी। इसमें अगर आप ये प्रूव करने बैठ जाएंगे ना कि इस्लाम इज द बेस्ट या जुडाइज्म इज द बेस्ट या क्रिश्चियनिटी इज द बेस्ट, तो ये एक फ्यूटाइल गुफ्तगू होगी, इसका कोई हासिल नहीं होगा। एक और जबरदस्त बात जो मैंने ऑब्जर्व की वो ये कि ये मंक सिर्फ 20 साल का था। ही वॉज वेरी यंग, लेकिन वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट भी था, वो मॉडर्न तालीम भी हासिल कर रहा था। थाईलैंड में इंग्लिश बोलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी। इसका मतलब यह है कि अगर आप दीन पढ़ रहे हैं, मजहब पढ़ रहे हैं, तो आपने मॉडर्न एजुकेशन को भी साथ साथ चलाना है। और आखिरी बात यह कि जब 2 पढ़े लिखे लोग बात करते हैं ना, तो वो इसी तरह के माहौल में बात करते हैं। उसमें हम एक दूसरे को पुश नहीं करते, बल्कि एक दूसरे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं अपने आप को ना एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एक ऑब्जर्वर, एक इंस्पेक्टर, एक लर्नर के तौर पर मानता हूं। मेरे लिए जब कोई सामने दूसरा कल्चर आता है या दूसरा मजहब आता है, तो मैं उससे ऑफेंड नहीं होता और ना डिफेंसिव हो जाता हूं, बल्कि आई गेट वेरी एक्साइटेड, क्योंकि मेरे लिए तो ये कमाल की लर्निंग अपॉर्चुनिटी है।
दूसरों के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की। लिहाजा मजहब के मामले में खुला जहन रखें। किसी और रिलीजन के बंदे से मिल लेंगे या उसके दीन को समझ लेंगे तो आपके मजहब या आपके ईमान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुल्ला की सोच के ऊपर मत चला करें। इस्लाम एक बड़ा रिलीजन है जो बड़ी सोच को नर्चर करता है, प्रॉस्पर करता है, आपको एक विजनरी शख्स बनाता है। लिहाजा छोटी छोटी ट्रिवियल और मंडेन चीजों में मत उलझा करें। और अब आखिरी बात, देखिए थाईलैंड एक ओवरवेलमिंगली बुद्धिस्ट कंट्री है। यहां पर बुद्धा को बहुत माना जाता है। हर 1 किलोमीटर के अंदर या हर 500 मीटर के अंदर आपको एक टेंपल नजर आता है। बुद्धा थाई लोगों की जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और मैंने आपको हमेशा यह बात बताई है और सिखाई है कि कोई भी मजहब, कोई भी इज्म, कोई भी आइडियोलॉजी अगर आपने टेस्ट करनी है ना कि वो कामयाब है या नहीं, तो आपने उस सोसाइटी को ऑब्जर्व करना होता है जो उसको फॉलो करती है। तो मेरा एनालिसिस ये है कि बुद्धिज्म के केस में इट इज अ सक्सेसफुल आइडियोलॉजी। थाईलैंड उन दुनिया के चंद मुल्कों में से है जहां पे रिलीजियस आइडियोलॉजी सक्सेसफुल हुई है। और मैं ये बात कंक्लूड करता हूं कि बुद्धिज्म वाकई एक प्रैग्मेटिक और प्रैक्टिकल रिलीजन है। इसका एहसास आपको सही मानों में तब होगा जब आप यहां पर आएंगे। यहां पर इन जनरल कोई चीटिंग नहीं है। वो जो पॉपुलर टूरिस्ट स्कैम्स होते हैं ना, वो तो हर मुल्क में होते हैं। उसके अलावा यहां पर शदीद सफाई है। वो कहते हैं ना कि सफाई निस्फ ईमान है, तो वाकई इन्होंने सही मानों में इस बात को प्रूव किया है। खवातीन के लिए कमाल की एम्पावरमेंट है। यहां पर ज्यादातर बिजनेसेस इनफैक्ट खवातीन ही करती हैं। आपको हर कोने पे एक मोटरसाइकिल के ऊपर एक खातून फ्रूट बेचती हुई नजर आएगी, या भुट्टे बेचती हुई नजर आएगी, या पैनकेक्स या रोटी बेचती हुई नजर आएगी। बीच रात में जब आप थाईलैंड में सड़क पर निकलते हैं ना, तो आपके ऊपर किसी किस्म का कोई खौफ नहीं होता कि आप लूट लिए जाएंगे। कराची में जब कोई शख्स मोटरसाइकिल पार्क करता है ना, तो वो हेलमेट बेचारा अपने साथ ही ऑफिस ले आता है, क्योंकि अगर उसने उस हेलमेट को अपनी बाइक पर छोड़ दिया ना, तो वो आखिरी दफा था जब वो उसको देखेगा। यहां पर बाइक्स के ऊपर कोई कपड़ा नहीं चढ़ाता। किसी को खौफ नहीं होता कि उसकी बाइक छीन ली जाएगी। थाईलैंड के लोग बुद्धा को तो मानते हैं, लेकिन उनका एक्सट्रीमिस्ट एटीट्यूड बिल्कुल नहीं है। हर शख्स मेहनत में लगा हुआ है। गवर्नमेंट जिस हद तक होता है सपोर्ट करती है। सिस्टम्स डेवलप्ड हैं, वेल मैनेज्ड हैं, इकोनॉमी थ्राइव कर रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि थाई लोगों के चेहरे पे हमेशा एक स्माइल मौजूद होती है। यही वजह है कि इसको लैंड ऑफ स्माइल्स कहा जाता है। और आपको क्या चाहिए? यही है बुद्धिज्म की सक्सेस। देखें, ये बात भी दुरुस्त है कि यहां पर लोग अपनी सेक्सुअल फैंटेसीज पूरी करने आते हैं, मैरिजुआना स्मोक करने आते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से फर्क सिर्फ ये है कि थाईलैंड में ये सब चीजें सरेआम होती हैं और बाकी मुआशरों में छुप छुपा के। और ये एक बहुत छोटा सेगमेंट है इस थाई सोसाइटी का। रियल थाईलैंड इज ब्यूटिफुल, चार्मिंग, वेल मैनेज्ड एंड मोस्ट ऑफ ऑल पीपल आर सुपर फ्रेंडली। लिहाजा मेरी रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से बुद्धिज्म A+ ग्रेड से पास होता है, क्योंकि इसने यहां के लोगों की वाकई में प्रैक्टिकली, प्रैग्मेटिकली हेल्प की है। और यही तो दोस्तों मकसद होता है रिलीजन का, कि वो आपकी जिंदगी को बेहतर करे। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय फ्रॉम थाईलैंड।